मैं स्विमिंग से आई and I got a little late, so she scolded me for that first. Middle class mentality always works. Never throw away things. She loves me more than Yogini. Meeru auntie, please like, share, subscribe. सब मैंने बोला ना, सब मेरे आजू बाजू के लोग जुगाड़ करना बहुत अच्छा सीखेंगे. Like, share and subscribe. Yes, like, share and subscribe. I'll put this plug after every video. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you guys are happy, healthy and staying hydrated. So as you can see, there's a change in the background for us. मैं आई हूँ योगिनी के घर पे. आई होप यू रिमेंबर हर, जो हमने 2 दिन मस्ती की थी मुंबई में. ओ माय गॉड, हम उसके बाद आज ही मिल रहे हैं. तो बिकॉज़ आप लोग मेरे कुकिंग व्लॉग्स को ना थोड़ा ज़्यादा ही भाव दे रहे हो, तो योगिनी इज़ लाइक, अरे मुझे भी कुछ बनाना है. आई शेयर अ हेल्दी रेसिपी, बट कुछ टेस्टी जो खाने में भी मज़ा आए, बनाने में भी मज़ा आए. सो शी इज़ गोइंग टू शेयर हर रेसिपी ऑफ व्हीट एंड ओट कुकीज़, जो वो हमारे साथ बनाएगी. व्हाट प्रेपरेशन शी हैज़ डन टू द टी, सब परफेक्ट करके रखा है उसने. वी आर बैक. क्या तैयारी करके रखी है इसने, मतलब माय गॉड. मैं थोड़ा सा has to be professional. Oh my god. Oh, she's taking the professional food vlogging more serious than me. She called me today and she's like, "You're not taking your vlogging seriously." I'm like, "I am, but I have content." She's like, "No, you're not taking it seriously. Just come home and I'll shoot a food vlog for you. I've thought of a recipe." So yeah, please guide us through the ingredients. मेरे से ज़्यादा professional food vlogging तो ये कर सकती है if she starts. आज जो इसने मेरी क्लास ली है सुबह से, यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग बट नॉट फॉर योर व्लॉग्स. आई एम लाइक, आई एम राइट नाउ एडिटिंग अ व्लॉग एंड शी, उसको पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया कि ये ध्यान नहीं दे रही है, ये व्लॉग्स नहीं बना रही है. शी फ्रिकन कैंसल्ड हर मेड बिकॉज शी वॉज गोइंग टू कम एट 7 PM टुडे एंड हमारे टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे थे. सो शी सेड, अरे वो मेड बीच बीच में करती रहेगी, खाना बनाएगी, तो उसको मैं आज नहीं बुलाती हूँ, बट आज व्लॉग तो शूट होना चाहिए. हाँ, शी टुक इट पर्सनली. से हम सिर्फ कुकीज़ बनाने वाले, तो बाकियों के डिनर का क्या, तो अब वो बाहर से मंगा रही है, बट प्यारी तो है. Okay, quickly we'll show you the ingredients. Okay, we have jaggery powder, half cup, Okay. 1 cup of wheat flour, 1 cup of rolled oats, half cup of loni. This is basically unsalted butter, White butter. Yeah. Yeah. Raisins, cinnamon powder, baking soda and baking powder. It's half teaspoon of each. Okay. And a pinch of salt, Okay. and 1 egg and vanilla essence. By the way, I have to tell you that this is not my recipe. Yeah. This is my husband's aunt's recipe, which Oh. I learned after my wedding, and I have been making it. And she's a brilliant cook. I mean, yeah, she makes these cookies really well. So I've learned it from her. Meeru auntie, thank you for your recipe. We're Yes. gonna get healthy cookies and we are trying to replicate it. So we are making Meeru's cookies. But no offense if it is someone's originally developed recipe. Yeah. We got it from our Meeru auntie, so for us it is hers. Yes, absolutely. Perfect. And I will send her this vlog. Yes. So that she can view it. And Meeru then give me auntie, back. please like, share, subscribe. So I have added half cup of butter and a little more than half a cup of jaggery. This jaggery is from a brand called Two Brothers. Of course, it's not sponsored, but I have tried multiple different products and this one is something that I've liked. So now we'll whisk the 2 ingredients. Okay. You can actually use any kind of butter, guys. Just use unsalted butter. After a little bit of whisking, we now crack open an egg into this. Are we adding just 1 egg? 1 egg is enough. Okay. Like, it's ideally half a teaspoon. Yeah. But I like it to be The flavor to be strong. Yeah. So I'm going to add a little bit of this first. It's the same logic, guys. Same logic है कि डालते रहो जब तक आपको फील ना आए कि सही है, तब तक डालते रहो, कोई बात नहीं. ऐसे लॉजिक सभी यूज़ करते हैं. मैं जस्ट खुल के बताती हूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ. Now we need to whisk this until it becomes really fluffy. Okay. All done.
So this is the consistency that we are going for. If you see, it's completely fluffy. So for the dry ingredients, we take 1 cup of whole wheat flour. You have to take any strainer you have, you can use that. Baking soda, baking powder, half teaspoon. Each, na? Cinnamon powder. Ooh, wow. I find this way of sieving a little better because when you do this, Yeah. it spreads around. Yeah. Tip. So even Quick if tip. It's a temptation I'm controlling to just put my finger and just lick a small bite because it smells very delicious. मैं तो थक गई भाई साहब. Even Deepan करते Farah Khan. She comes into the vlogs, just does a couple of things and says, मैं तो थक गई. Yeah. वो मैंने चख के देख लिया मिक्सचर. बहुत अच्छा. Okay, now we mix all the dry ingredients Okay. into our wheat ingredient. You can add raisins. All the first. raisins? You see if you like. I don't like so much, but I'll add some because even I don't like raisins. But raisins in this recipe taste really good. But you can add so a little add, bit. yeah. Yeah, that should be fine. Okay. And these are 1 cup of rolled oats or whichever oats that you like. Perfect. सारे ingredients mix हो गए. This is what we're working with. Take a spatula and for now only keep folding it. Okay. So just don't go mixing it anyway. Just Right now don't. okay. Later anyway, we are just trying to incorporate the air as much as possible. Okay. Actually, baking literally has science in it. Like If you have to If you do this recipe, like if you follow the recipe to the tea. to the T, Yeah. it's going to turn out to be really well. Because I have realized one thing about baking, andaz panchkai hote hain. Like you have to really be specific with the kind of ingredients that you use or how much you use and Proportions what are to use. important. Very important. I mean, small things like vanilla essence and all that is okay because Yeah. that's just adding a It's flavor. just adding a flavor. But other things you need to be particular Yeah. about. The time and the texture that's needed to get. Yeah, absolutely. The more patient you are, the better the cake is. That's why I'm not doing it. ऐसा नहीं है कि मुझ में पेशेंस नहीं है. पेशेंस है. बस ये जितने पेशेंस से करी उतना नहीं. ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करना चाहती, बट मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं हेल्प करने जाऊंगी और फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसको अच्छा नहीं लगेगा. तो मतलब ऑन कैमरा ऑन वीडियो मुझे डांट पड़ सकती है. तो मुझसे 12 दिन बड़ी है योगिनी, बट पूरा फ़ायदा उठाती है वो 12 दिनों का. इट्स गेटिंग टुगेदर. सी वाव, जसं मिक्स झाल्यावर जे असं एक Yeah. कलर यायला लागतो आणि इट जस्ट लुक सो गुड. क्या आज खातिरदारी हुई है मतलब मेरी. मैं स्विमिंग से आई एंड आई गॉट अ लिटिल लेट, सो शी स्कोल्डेड मी फॉर दैट फर्स्ट. देन शी वॉज लाइक अच्छा क्या खाना है. मैंने बोला अरे मैं अभी डाइट स्टार्ट किया. आई डोंट रियली वॉन्ट टू ईट एनीथिंग. थोड़ा बहुत आई ईट लेटर. एंड आई डोंट नो वॉट लाइक वेंट ऑन विथ हर. शी सेड डू यू वॉन्ट पास्ता, डू यू वॉन्ट अजून काय विचारलं तुम्हाला. मॅगी. आय एम लाइक आई जस्ट टोल्ड यू दैट आई एम ऑन अ डाइट राइट, सो आई कांट ईट ऑल ऑफ दिस. एंड देन तो मतलब सिक्सर मार दिया. आलू पराठा खाओगी. एंड यार आलू पराठा का कैसे इंसान मना करे. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है एक खा लेती हूँ बट उतना ही. तो एक आलू पराठा एंड उसके साथ गिव मी सम हेल्दी 4 grain खाकरा और समथिंग जस्ट टू गुड. उसके बाद भी पूछ रहे राइस खाओ कि राइस मसाला राइस. आई हैव मेड सम पुलाव, तवा पुलाव टाइप, यू ईट दैट. एंड आई एम लाइक नो बेबी आई एम ऑन अ डाइट, आई कैन नॉट ईट इट. 2-3 दिन पहले ही आई स्टार्टेड. नाउ आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज तो मैं फैल जाती हूँ वैसे भी डाइट में. बट आज जो खातिरदारी हुई. Okay, so we are going to keep this mixture in the freezer for almost say some 5 minutes. ओके. It's a little wet and I want it in a consistency where we can mix it. सो बेसिकली जुगाड़. हाँ, जुगाड़, correct. जुगाड़ कि अगर आपका मिक्सचर थोड़ा आपको जिस कंसिस्टेंसी से चाहिए उससे ज़्यादा पतला हो जाए, Don't try and add ingredients. हाँ तो इंग्रेडिएंट्स ऐड मत कीजिएगा. उसे बस 5 से 6 मिनट तक, चलो 10 मिनट तक फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए एंड यू कैन रोल इट ईजिली. सब मैंने बोला ना, सब मेरे आजू बाजू के लोग जुगाड़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं. सो दिस इज़ द ट्रे दैट वी आर यूजिंग. आई थिंक दिस इज यू हैव एन ओवन ना. I have an oven, but I am making this in the Microwave? for now. ओके परफेक्ट.
तो ये हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं. सो जब तक हमने वो कुकी का डो फ्रीज़र में रखा है तब तक लेट्स सेट आवर ट्रे, प्रेप द ट्रे. दैट्स इट. अगर आप पार्चमेंट पेपर यूज़ करते हो, पार्चमेंट पेपर इज़ वेरी सिमिलर टू बटर पेपर. दे आर सेम वेरियंट्स, उन दोनों का फंक्शन सेम है. अगर आपके पास ये नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव पार्चमेंट पेपर और बटर पेपर, यू कैन ऑलवेज ग्रीस योर पैन और ट्रे. जस्ट मेक श्योर कि केक के लिए जैसे हमने सिर्फ ऑयल या घी से ये किया था, फॉर कुकीज़ आई थिंक यू नीड टू अप्लाई दैट वट एवर ग्रीसिंग यूर अप्लाइंग एंड जस्ट थोड़ा सा उस पर वो आपका फ्लावर डाल दीजिए. स्प्रिंकल अ बिट ऑफ फ्लावर ऑन इट. Do you want to taste this and tell me if you need more sugar? I already tasted the. Very good. It's very good. त्यात वॉलनट्स पण खूप छान लागतील. टाकू? टाकायचं? वॉलनट्स मस्त लागते. Contribution. Oh, I can actually tell you a जुगाड़ for parchment paper. Yeah. अमूल बटर में जो बाहर का पेपर है, Oh. that is butter paper. जुगाड़ 101 guys. Don't throw it away. Just keep it. Keep and it, use save it. Middle class mentality always works. Never throw away things. These are the type of cookies which are not very decadent or gooey or soft. These Yeah. are crisp and they are like You know, they're like biscuits. grandma cookies. Yeah, they're like grandma cookies. कई book store में या you know how there's those antique gift shops and then they have a jar filled with cookies. These are those kind of cookies. Yeah. So something which you can make small rolls out of, and it doesn't stick to your hand as much. But I still feel it needs a little because it's still sticking to my finger. Oh, so it right? should not stick It at should all. not stick. Not Okay. not at all, but it should not stick. But it will happen if we keep it in the freezer for another 5 minutes. Okay. We took out the cookie dough mixture from the freezer and she's just trying to see if it is the consistency that she wants it to start rolling. Okay, this has perfectly reached the consistency that we want. Okay. And only with freezer it has happened. See? So now see it's not sticking. Oh. Even if you Cool. roll it out, it Yeah. doesn't stick. Actually, we take this much. Okay. So our cookies are like the shape is consistent. Yeah. You just basically roll it in your hand like this, Yeah. like a laddu, and press it a little. That's it. That's how we make it. Oh, perfect. You know, it's not sticking, so this is the kind of consistency that you want. We are going to preheat the oven at 170 degrees for 10 minutes. Oven, microwave, जो भी आपके पास हो. हम actually microwave में बना रहे हैं, but आप oven में भी बना सकते हो. So this is the first time that I'm trying it with walnuts. So let's see. I've never added walnuts, Oh. or the recipe doesn't have walnuts. Experimental. But walnuts will also add that Of course, crunch and everything. crunch and it's healthier also. And it's not swaying away from being healthy. Oh, our cookies are ready to put in the oven. Sugar. This is the drama. This is where the drama is. I thought they fit oil. Apparently, it's not fitting. But anyway, we have Jugaad. jugaad, and that's why we've transferred it to a plate. We just have to switch the Rearrange it a little bit. But it's okay. Changed our tray and it was way easier because we were using parchment paper. 760. 17, 18 minutes, and then I start. Oh my god, look at this. It's looking so good. And it's smelling incredible. I think we're keeping it for a few more minutes. Kitty, 5 more minutes? 5 minutes. Yeah, so पहले हमने 17 minutes के लिए लगाया था. We are keeping it for another 5 minutes. पूरा dark brown होना चाहिए. So that's what we are going for. So first batch is done. Look at these cute little cracks on the cookies. This is how you know your cookies are well done, when they start cracking up a bit. Oh my god. 10 to 15 minutes you let them cool and then you can have it. I cannot emphasize enough. This is smelling incredible.
Rahana, she's Yogini's little sister. She loves me more than Yogini. It's very good. Walnut is a good addition. Subscribe करो. Manna, please. Okay, we have to like, share, and subscribe. Yes, to my channel. Thank you.